Welcome, students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. On 15th of February, Strawberry Fields School conducted their annual examination of 2022-23 for mathematics subject. So, 2 hours 30 minutes to grab full 80 marks. Let's get on with it. Section A. Now it carries 40 marks and usme bhi question 1 carries 15 marks. These are objective questions. Let's do them. Which of the following is an irrational number? Okay. Root 25. Of course, dekhte hi pata chal jayega. This is 5. Root 7. Root 7 is an irrational number. B part is the right choice. Agar hum dusra dekh bhi le, 5. 25 times root 25, again it becomes 5. So, जो 7 choose किया हमने root 7, that is absolutely correct. B part is the right choice. Part 2. X plus y is 10, xy is 12, x square plus y square क्या होगा? अब खुद देखो, x plus y से x square plus y square में कैसे जा सकता हूं? x plus y whole square. Now, what is x plus y whole square? X square plus y square plus 2xy. X plus y, we need the value, which is 10, 10 ka square. X square plus y square, we need to find it, plus 2xy, it is 12. This becomes 100, and this comes here as minus 24, x square plus y square. So, 100 minus 24 is 76. A part is the right choice. Part 3. If sum of two numbers is 21, sum of two numbers. Okay, I don't know these numbers. Now, the statement says greater of the two numbers is twice the smaller. Okay, let the smaller number be x. So the greater number will be twice the smaller. Now, I need to find the smaller number, means I need to find x. So 3x is 21. X is 7. The smaller number is 7. A part is the right choice. Part 4. The value of 5, 1 by 16 raised power 3 by 4. This is a mixed fraction. So, we have to turn it into an irreducible form first, right? So, 16 5s are 80 plus 1, 81 by 16 raised to the power 3 by 4. Now, power में 3 by 4 है. ठीक है, power 3, it's absolutely fine with me. यार 1 by 4 का क्या करूं? 81 by 16. I can write 81 as 3 and 16 as 2 whole power 4 and then raised to the power 3 by 4. अब power की power है, it will get multiplied. So 3 by 2 power is 3. So 27 by 8. C part. Done. Up. Triangle ABC is right angle triangle. Right angled at A. Okay. Let me do this. Right angled at A. Okay, I'll take B over here and C over here. AB is equal to AC. इससे मुझे क्या पता चला? These two angles will be equal. And this is 90. Then find angle B and angle C. Angle B and angle C. Let this angle be x. So this angle will be x. 2x plus 90 gives you 180. 2x is 90. Wait, 90 ki side change kari. So x value is 45. Means angle B is 45, angle C is 45. B part is the right choice. Sixth part. Three angles of a quadrilateral are 75, 90 and 75. Fourth angle will be, okay, fourth angle. Angle sum property, that's it, will be equal to 360. So 75 plus 75, 150 plus 90, that is 240 plus x gives you 360. So x will give you 120. D part, right choice. Seventh, the chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of diameter 20 centimeters. Distance of the chord from the center of the circle will be, okay, let me draw the circle first. Now, this is the center. This is the chord. Chord मैं ले लेता हूं AB. Now,
Distance from the center. Center से फिर मैं क्या गिराऊंगा? It is always perpendicular distance. Let me take this as an. Center से अगर मैं perpendicular गिराता हूं किसी भी chord पे, it would bisect the chord. AB total is given as 16. So AM कितना हो जाएगा? 8. I need to find this. This is O. So if I join A to O, it will become the radius. Diameter is 20. Radius will be 10. Now OM निकालना है. Wonderful guys. Pythagoras theorem लगाओ. 8 square plus OM square is equal to 10 square. So OM square will be 100 minus 64. That is 36. So OM will be 6. B part is the right choice. Next, the area of an equilateral triangle is 16 root 3 centimeters. Okay. Perimeter of the triangle is. Equilateral triangle के area की बात करी, right? Equilateral triangle का area होता क्या है वैसे? Root 3 by 4 a square, right? So this is equal to 16 root 3. Root 3 cancel हो गया. A square की value कितनी आ गई? 16 4s are 64. What is A? A is 8. So perimeter of a triangle, of an equilateral triangle, this is 8, this is 8, this is 8. So perimeter would be 3A actually. So 8 3s are 24. 24 centimeters. Done. Ninth, sine theta of the ratio is, मैं एक right angle triangle बनाता हूं. This is theta. So sine theta होता क्या है? Sine theta is perpendicular, ये base, ये hypotenuse. So sin theta को हमने define कैसे किया था? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse. But the value of tan theta is, no, tan of 45 degrees is, not theta. मेरे को 45 degrees दे दिया. Tan of 45 degree is 1. क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं. Just write the answer. Complement sine of 90 minus theta. So that would be cos theta, complementary angles. A part. Next, in which quadrant will coordinate minus 5 comma 4 lies? बना के ही देख लेते हैं यार. भाई x नेगेटिव कहां होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में. यहां पे 4 पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा minus 5 comma 4. So कौन सा क्वाड्रेंट आया ये? सेकेंड क्वाड्रेंट. B part. Next, the median of the numbers. Okay, यार मीडियन निकालने के लिए I need the middle number, right? So सबसे पहले मैं क्या करूंगा? I have to put them in ascending order. So ascending order में 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 and 2 9s, right? So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 means the middle two. 1, 2, 3, 4, 5 अलग, 5 इधर अलग, बीच के दो numbers मिल गए मुझे. So middle two numbers, add them up, 9 divided by 2, which gives you 4.5. This is the median. C part. Question number 14. No, not the question number 14. It is part 14. So we have to find the value of x. So either x minus 2 is 0 or x minus 3 is 0, right? Either of them becomes 0, this equation will become 0. So either x is 2 or x is 3. कहां पे मिल रहा है? A part में. Next, 2x plus 5 whole square. You have to expand this. Okay, ये बना क्या? A plus b का whole square ही तो बन रहा है, right? A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x का स्क्वायर, then 5 का स्क्वायर plus 2ab, right? So this becomes 4x squared, this becomes 25, and this becomes 4 5s are 20x. B part is the right choice. Next question पे चलते हैं आप. Question number 2. Question number 2 is of 12 marks. 3 parts, 4 marks for each part. So be careful with this. Let's do it. In the given figure, WXYZ is a parallelogram. Having perimeter 28 centimeters, find the lengths of sides of a parallelogram. Okay.
पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 28, ये पैरेललोग्राम है, राइट? लेट इन दिस पैरेललोग्राम लेट दिस बी L and this be B, length and breadth, right? So now the perimeter is given, so I can use perimeter, that is 2 times L plus B, right? Perimeter is 28, so I think I can find L plus B value, right? L plus B would be 14. Up. Find the lengths and sides of a parallelogram. Okay, what to do? मैंने अभी ये perpendiculars का use नहीं, right? So, what is the area of a parallelogram? Area of a parallelogram, base into height, right? What is base over here? I can take base as L and height as 8 centimeters. मेरे पास एरिया तो आ गया, राइट? मैंने 1 लिख लिया इसको, एरिया फ्रॉम द फर्स्ट. कहीं और से मैं एरिया निकाल लूं, माय प्रॉब्लम माइट बी एबल टू सॉल्व. एक तरफ और से एरिया आ सकता है, बेस इनटू हाइट ही करना है ना. आई कैन टेक बेस एज बी आल्सो, राइट? बेस इनटू हाइट इज 6. भाई दोनों सेम पैरेललोग्राम के एरिया है, आई हैव टू इक्वेट देम, राइट? सो दोनों एरियाज को मैं इक्वेट कर देता हूं. सो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2. L into 8 is equal to breadth into 6. Right? Let's check it. बिल्कुल ठीक है. What to do? मेरे पास एक और चीज पड़ी है, L plus B is equal to 14. I have two equations now. I can solve this. L की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, 6B by 8. So 2 3s are 6, 2 4s are 8. So L is equal to 3B by 4. It can be substituted over here. So this will be 3B by 4 plus B is equal to 14. Now let me take the LCM. 4. So 3B plus 4B is equal to 14. So 7B is equal to 14 into 4. B value 14 into 4 by 7. 7 2s are, B is given to be 8, right? मैंने B निकाल लिया 8. So of course 8 centimeters, and L plus B is 14. Now where B I have found out to be 8, I can find out L very easily, which will be 6 centimeters. See how simple, straightforward it was, but you have to write it properly to get full 4 marks over here. Next, PQRS is a rectangle whose vertices are 0, 3, 0, 0, 5, 0. Plot the points to find the fourth coordinate. Also find the length of the diagonal using the distance formula. Okay, so मैं सबसे पहले ग्राफ पे बनाता हूं. आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, ऑफ कोर्स. 0,3 somewhere here. This will give me P. Q is 0,0. Of course, it goes to the origin, and this comes out to be 5,0. This is R. So I know, ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे यहां पे आएगा पॉइंट. So this is the rectangle we were talking about. इसके coordinates, of course, PQR, this will be S, 5,3. Now the last part would be भाई Q से S को ज्वाइन कर दो. Now write the distance formula. Distance क्या होगा? Under root of A2 minus A1 whole square plus P2 minus B1 whole square. Cool. So distance D is equal to under root of A2 5, A1 0 square plus B2 3, B1 0 square. D is equal to under root of 5 ka square, that is 25, 3 ka square, that is 9. So distance formula is under root of 34. That's it. Now 4 marks are yours. And the part C. The volume of a cuboid is 28,800. Height bhi de di.
Cross section of a rectangle, length and breadth are in ratio भी दे दिया, and finally you have to find the perimeter of the cross section, मतलब कि base का perimeter लेना, right? So let's do it. Let me make the cuboid first कि हमें चीजें दिखें पहले. This is the cuboid, right? So let me take this as L, this as B, and this as H, right? H is already given as 24. Length ratio breadth is already given as 8:6. So let length be 8x and breadth be 6x. Now, length भी आ गया, breadth भी आ गया, height भी आ गई. Now it is given as volume. Volume होता क्या है भाई? Length into breadth into height. Of course, I'm talking about a cuboid that is also given as 28,800. Now, length 8x, breadth 6x, height 24. So 28,800. यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ठीक है. साथ में क्या आएगा? 8 into 6 into 24, which is equal to 28,800. x square क्या आ जाएगा? 28,800 divided by all these numbers. आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करने चाहिए थे. X square will become 25, so x will become 5. As soon as I get x as 5, I can find length. Length is 8 into 5, that is 40, right? Of course, centimeters. Breadth is 6x, 6 into 5, that is given by 30 centimeters. Now I need to find the perimeter of the cross section. Perimeter क्या होगा guys? Base का perimeter, length, breadth. Of course, it will be 2 times L plus B. So perimeter would be 2 into, length is given as 40, breadth is given as 30. So perimeter is equal to 2 into 70. Perimeter is given to 140 centimeters. Let's move on to the next one. Question number 3. In the given figure, AB is parallel to CD दिया हुआ है. O is the midpoint of BC. BC पे O midpoint है, मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है. Show that AOB is congruent to DOC. Okay. And O is the midpoint of AD, मतलब कि ये प्रूव करना है. And AB is equal to CD, ये भी प्रूव करना है. Okay. Let's start with the very first one. Triangle AOB is congruent to triangle DOC. ये प्रूव करना है. अब AOB की बात करी हमने ये, और DOC की बात करी यहां पे. So, what do we know? OB is equal to OC. Wonderful, we know that. अब angle 1 is equal to angle 2. ठीक है, इसको मैंने लिख दिया vertically opposite angles. This was given. Okay. And ये angle और ये angle दोनों equal होंगे. Alternate interior angles. This is 3, this is 4. Angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angles. So triangle AOB is congruent to triangle DOC. ये दोनों triangles congruent हैं through ASA rule. First one done. O is the midpoint of AD. Okay, मैं यहां से simple ये लिख सकता हूं OB is equal to OC. वो तो दिया हुआ है, मेरे को लिखना है OA is equal to OD. ये लिख सकता हूं CPCT. ठीक है, O becomes midpoint of, O is midpoint of AD. आ तो गया, ये भी हो गया. एंड मैं सीधा यहां से ये भी लिख सकता हूं AB is equal to CD. किससे? CPCT. प्रॉब्लम इज डन. ये भी कर दिया, फुल मार्क्स. नेक्स्ट पार्ट. Cos A is 9/41. Okay,
मैं एक काम करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेता हूं, बिल्कुल सिंपल। मैं इसको ले लेता हूं ए, इसको ले लेता हूं बी, राइट एंगल एट बी, एंड दिस इज सी। उसने बोला cos ऑफ ए, दिस एंगल इज 9/41। अब cos ऑफ ए तो मुझे ये भी पता है क्या होता है। cos ऑफ ए क्या होता है? बेस बाय hypotenuse, this would be perpendicular, so ये आ जाएगा base by hypotenuse, which is nothing but 9/41. So I can take base as 9k and hypotenuse as 41k। रेशियो दी हुई है ध्यान से। So मैंने इसको लिख लिया 9k and hypotenuse को लिख लिया 41k। मेरे को बाकी सारी रेशियोज निकालनी है, मीन्स आई नीड ऑल द थ्री। ab square bc square is equal to ac square, Pythagoras theorem। ab 9k का स्क्वायर, bc I need to know, ac 41k का स्क्वायर। सो bc स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 k स्क्वायर माइनस 81 k स्क्वायर। सो bc की वैल्यू ना, bc का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1600 k स्क्वायर। सो bc वुड बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 40k। BC मेरे पास मतलब कि परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 40k। जो मर्जी लिखते जाओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन ए से। सो साइन ए वुड बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो 40k बाय 41k। सो मैं साइन ए यहां से लिख दूं, साइन ऑफ ए इज नथिंग बट 40/41। नेक्स्ट इज टेंजेंट ए। टेंजेंट ए कितना होता है? टेंजेंट ए इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 40k बाय बेस 9k। सो मैं यहां से लिख दूंगा टेंजेंट ऑफ ए इज 40/9। ये भी आ गया, राइट। नेक्स्ट कोसिकेंट ए। यार कोसिकेंट ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए। सो 1 बाय साइन ए कितना है? 40/41। So this will become 41/40. So cosecant A 41/40। अब मैं लिख लेता हूं secant A 1/cos A से। 1/cos A कितना है? cos A तो मुझे दिया हुआ था 9/41। So this would become 41/9। तो secant A 41/9। एक्चुअली आप कोसिकेंट ऐसे भी लिख सकते हो, कोसिकेंट आएगा क्या? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इससे भी लिख सकते हो। कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज बाय, एक मिनट, कोसिकेंट आया ना, सो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आएगा, और सीकेंट आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड फाइनली कॉट ए। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, 1/tan ए से लिख सकते हैं हम लोग। 1/tan ए है कितना? 40/9, which is equal to 9/40। So cot of A is 9/40। तो मैं cot A यहां से भी लिख सकता हूं, which is base by perpendicular। You can use this as well। And Mrinal is a branch manager for a local bank, and read it carefully, the customer feedback and the waiting time दिया हुआ है, ठीक है। So there are 20 customers और उनका waiting time दिया हुआ है, ठीक है। Construct a histogram polygon for the above findings taking the class intervals as this, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को इसको कॉन्टिन्यूस डेटा पे लेकर आना पड़ेगा, राइट। सो कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए आई हैव ऑलरेडी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी। देन क्लास इंटरवल 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। You have to write the tally marks as well as frequency, add it up, it should get
अब हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा. I've already made it for you. हिस्टोग्राम आ गया ये. Frequency on y axis, class interval on x axis, kink लगाना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा. Now, मेरे को हिस्टोग्राम इजीली बन गया, बट उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोला है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैं क्लास मार्क्स को ऐड कर देंगे. यहां पे मेरे को 25 बनाना पड़ेगा. फिर यहां पे इसके मिड पॉइंट से आई विल जॉइन दिस, दिस, देन दिस, दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है, ये पार्ट भी हो गया. एंड द लास्ट पार्ट, वेट टाइम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स. मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स के लिए वेट टाइम है कितना? मेजॉरिटी out of 20 would be more than 10 plus customers. यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 2. So majority आई कहां पे? यहां पे. This is majority, right? अब ये majority किसके बीच में है? 37.5 and 47.5. Here you'll get the majority. दोनों के क्लास मार्क्स के बीच में. So majority कहां पे आई? 37.5 and 47. This is the majority, right? Next question. Let's move on to section B. Now, section B consists of 40 marks. You have to attempt only 4 questions. Let's jump on to the very first one. Question number 4. Plot the points A, B, C, D, coordinates दिए हैं on the Cartesian plane and join the points to name the figure so formed and find its area. Okay. सबसे पहले plotting कर लेते हैं हम लोग. This is X, this is Y. The first point was 6, 4, which was A, and the second point was somewhere here, -4, 4, which was B. Third point C was somewhere over here, -4, 4, and D point was somewhere over here, 6, -4. So, if you join these, आपने तो ग्राफ पेपर पे बनाया होगा, it would be perfect in every sense. If you join these, you will form a rectangle. You have to write it to get marks over here. Rectangle is over here. Now, what to do? मेरे को क्या चाहिए? Area of a rectangle, right? क्या होगा? Length into breadth. मैं काम करता हूं, CD को लेंथ ले लेता हूं and AD को breadth ले लेता हूं. So now I need this part. How much is this part? That is 4. I need this part. That is 6. So length will be 10. This is 4 and this is again 4. Breadth would be 8. So area would be 10 into 8, which is nothing but 80 square. That's it. Next part. Twice the age of son is added to the age of father. Sum is 56. Twice the age of father is added to the age of son. Sum is 82. Find the ages of father and son. So, मैं सबसे पहले start करता हूं. Let son's age be x and father's age be y. The first equation, twice the age of son added to age of father, the sum is 56. Twice the age of father added to the age of son, the sum is 82. So इसको पहले ठीक करके लिखते हैं. 2x plus y is equal to 56 and x plus 2y is equal to 82. I'll use the method of elimination. Equation number 1 को मैं 2 से multiply कर देता हूं. So the equation form on both the sides. So equation would form as 4x plus 2y is equal to 112. यहाँ पे देखो twice करा, 4x 2y 112, and over here I will get x plus 2y is equal to 82. Subtract these.
this would get you 3x. Subtraction say this would eliminate. Subtraction say this would get to 30. So x is equal to 10. Age of sun तो 10 आ गया. Now किसी भी इक्वेशन में हमने पुट करना है 2x plus y is equal to 56. So 2 into 10 plus y is equal to 56. So y is equal to 56 minus 20. Y is 6. So son की age is 10. Father's की age is 36. Of course, in years, here it is. Right? Next part. Solve for x. इसको solve for x करना है. Okay. अब मेरे पास x left hand side में है and x की terms and number, the numerical value is on the right hand side. क्या करूं? इसको इधर ले आते हैं. X square minus 6x minus 27 will give you 0. Right? यार मेरे पास 3 terms आ गई. The only choice is splitting the middle term. दो numbers को add करना है -6 and दो numbers को multiply करना है, then you will get -27. कौन से ऐसे दो नंबर लो? 9 3s are 27. ठीक है, माइनस बनना चाहिए. माइनस कहां से पता चलेगा? यहां से. -9 plus 3 is -6, so -9 into 3 is -27. नंबर हम चूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन से, हम साइन चूज करते हैं एडिशन से. सो एक्स स्क्वायर -9x plus 3x minus 27 becomes 0. इन दोनों में से कॉमन x. क्या बना मेरे पास? x minus 9. इन दोनों में से कॉमन 3. क्या बचा मेरे पास? x minus 9 which becomes 0. अब ये दो टर्म्स रह गई मेरे पास. x minus 9 कॉमन. यहां पे क्या बचा मेरे पास? x plus 3 which is equal to 0. x minus 9 is 0 or x plus 3 is 0. So either x is 9 or x is 3. Yeah, that completes your question. Next one, guys. Question number 5. At what percent will the sum 4000 yields 1324 as compound interest in 3 years? Okay, मेरे को रेट निकालना है. मेरे को दिया क्या क्या हुआ है. सबसे पहले तो वही देखेंगे. Principal is given as 4000. Compound interest is given as 1324. Time is given as 3 years and I need to find rate. Right? Now, यार फॉर्मूला किसका पता है मेरे को? Amount is equal to principal into 1 plus r by 100 raised to the power n. अब मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, मेरे को तो अमाउंट दिया ही नहीं हुआ. Again we know amount is equal to principal plus compound interest. I can find amount easily. Principal is 4000 plus 1324 which is compound interest. So amount would be 5324. Amount आ चुका है. Let's put in 5324. Principal is 4000. 1 plus r. तो निकालना है. Rate by 100 raised to the power n. N is 3. Right? So 5324 by 4000 is equal to 1 plus r by 100 raised to the power 3. अब सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे. 4 से डिविजिबल है of course. So 1331 by 1000. Oh, wonderful. Now 1331 by 1000 is nothing but 11 by 10 whole cube. And 1 plus r by 100 raised to the power 3. Right? अब देखो, bases and बीच में इक्वालिटी, पावर्स देखा. पावर्स अगर सेम है तो बेसिस हैज टू बी सेम क्योंकि बीच में इक्वालिटी है. सो 11 by 10 इज नथिंग बट 1 plus r by 100. 1 की साइड चेंज करी. सो 11 by 10 minus 1 is 1 by 10 which is nothing but r by 100. I can find r from here as 100 by 10 which is. That's it. So simple.
Next one. Express this decimal in p by q form. Okay. So मेरे को ये क्या दिया हुआ है डेसिमल में x is equal to 0.621, 621, 621 and so on. Right? अब multiply both the sides. Of course, ये आपको लिखना पड़ेगा. Multiply both the sides by 1000. So 1000x is equal to 621.621, 621 and so on. Right? Point अब यहां आ गया. Now यहां पे x लिया 0.621621 and so on. Let's subtract it. We will get 999. X is equal to 621. So x is equal to 621 by 999. So once you reduce it, you will get 23 by 37. So p by q form में आ चुका है मेरा number 23 by 37. Full marks 3, yours. Construct a rectangle whose length is 6.2 centimeters and breadth is 5.5 centimeters. That's it. So you have to construct. Means आप सबसे पहले AB बनाओगे a line segment of length 6.2. Right? Of course, centimeters. You'll mark it, label it like this. Now, draw a 90-degree angle at B. So arc बनाओगे without change करे आप cuts लगाओगे दो. This will be 60 cut, this will be 120 cut. फिर यहाँ पे रखोगे cut ऊपर, फिर यहाँ पे रखोगे cut ऊपर, and this would be 90 degree. Right? Same way A पे बनाओगे arc लगाया, first cut, second cut, 60 and 120 का cut लगाया, फिर यहाँ से दो cuts लगाए and a dotted line. Right? दो 90 degrees के angle बन चुके हैं. You have to label it as 90 degrees. Now, compass लोगे 5.5 centimeters खोलोगे, A पे रखोगे and you'll take a cut over here. B पे रखोगे same without change cut यहाँ पे लगाओगे. AB, this would be C, this would be D. इसको dark करोगे, इसको भी dark करोगे and join these two. This is your ABCD rectangle. So whatever I spoke, just write it. अगर teacher बोल देता है कि नहीं, you have to write the steps of construction, just write it down in the same way. Of course, you have to label it. I forgot to label it over here. At least this much labeling is required. Right? Next question पे चलते हैं. Question number 6. Part A. AB and AC are equal chords. Okay. AB and AC are equal chords of a circle with center O. Prove that OA bisects angle BOC. BOC. ये वाला एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है. Now, अगर आप कॉर्ड देखो AB, AB subtends angle 1 at the center. AB subtends angle 1 at the center. मैं मार्क कर देता हूं, angle 1 at the center, right? AC subtends angle 2 at the center. ये लिखना पड़ेगा, right? AB is equal to AC implies angle 1 is equal to angle 2. Angle equal chords subtend equal angle at the center. पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा. Equal chords subtend equal angle at the center. So AB और AC equal कर दिए, angle 1 angle 2 equal हो गए. So I can simply write OA bisects angle BOC. One can be this. Okay. There can be another method also. I can use congruency in these two triangles. So triangle AOB and triangle AOC. This is equally correct method. You can use this as well. So I know AB is equal to AC. ठीक है, ये तो given है. What else? OB is equal to OC. Why? Radius. And OA equal to OA. Common.
So triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS rule. Right? SSS rule से triangles congruent हो गई. I can say angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. So I can write it from here. OA bisects angle BOC. ये एक्चुअली इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ द अर्लियर सॉल्यूशन. यहां पे हमने डायरेक्टली यूज किया ऑलरेडी नोइंग स्टेटमेंट्स का, ठीक है, थ्योरम्स का, ठीक है, और यहां पे हमने उसका प्रूफ किया. सो अगर टीचर ने कहा है कि भाई इस मेथड से करना है, डू दिस मेथड, अदरवाइज यू कैन अप्लाई दिस मेथड एज वेल. राइट. बी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन. Okay. एक्सपोनेंट्स पे है. राइट, लेट्स डू इट. सो यहां पे 8, यहां पे 0.25, यहां पे 60, मींस 2 पे लेके जाना है किसी तरह से. राइट. सो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको, रेज टू द पावर x माइनस 1. राइट. सो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, विच इज a रेज टू द पावर m इनटू ये यूज किया. राइट. यहां पे 0.25 था, मैं इसको लिख लेता हूं 25/100 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x, और मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/2 पावर 4 रेज टू द पावर x. नाउ अप्लाइंग दैट, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 25, ये गया 4 टाइम्स. सो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2 की पावर दिस. सो ये आ गया 1/2 की पावर 4x. सो 2 की पावर 3x माइनस 3 इंटू यहां पे आया 1/2 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 2x, और यहां पे आ गया मेरे पास 1/2 की पावर 4x. अब देखो, यहां पे 2, यहां पे 1/2, यहां पे 1/2. एक काम करते हैं, सब कुछ न्यूमरेटर में ही ले आते हैं, 2 पे ही लिखेंगे. 2 की पावर 3x माइनस 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर माइनस 1, एंड फाइनली मल्टीप्लीकेशन 3 2 6 माइनस 4x इज इक्वल टू, यहां पे ले आता हूं 2 की पावर माइनस 1 रेज टू द पावर 4x. So let's go ahead. 2 की पावर 3x माइनस 3 इंटू, और यहां पे आ जाएगा 4x माइनस 6, 2 की पावर 4x माइनस 6, राइट, इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 4x. राइट. नाउ अब मैं क्या यूज कर रहा हूं? मल्टीप्लीकेशन का. a raised to the power m into a raised to the power n will be equal to a raised to the power m plus n. So 2 की power 3x minus 3 plus 4x minus 6, which is equal to 2 की power minus 4x. So 2 की power, this will become 7x minus 9, which will be equal to 2 की power minus 4x. Bases are same, बीच में इक्वालिटी है, power has to be same. 7x minus 9 is equal to minus 4x. ये इधर आ जाएगा, that will become 11x, और ये इधर चला जाएगा, which will become 9. x की वैल्यू 9 by. Final answer. Next, 2 poles, okay, as given. This is 15, this is 35. They are 15 meters apart, already given. Distance between the tops, मतलब कि distance between the tops means मेरे को ये निकालना है xp. अब अगर आप ध्यान दो, ठीक है, and also find the area of pxr, मेरे को इसका एरिया भी निकालना है. ओके. अगर आप ध्यान दो, xp अगर आपको निकालना है, you have to deal with triangle pxr, right? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. If this angle is perpendicular, this is 90, this is 90, this is 90, I can say x, y, o, r is a rectangle.
All angles are 90, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको फिगर में, right? All angles are 90 means RO, I hope so, that is RO, or it might be Q also. It's not clear, so I'll put Q. So RQ will be equal to 15 meters, right? So I can find PR as 35 minus 15, which is nothing but 20, right? 20 meters. So this becomes 20 meters. What about XR? XR is equal to YQ. भाई rectangle का use कर रहे हैं, and YQ already I know that is 15 meters. Opposite sides of a rectangle are equal. You have to write this over here to get marks over. So this would be 15 meters. I can write XP का square is equal to XR का square plus PR का square. So XP square is nothing but 15 square plus 20 square. This is 225. This is 400. This is 625. So, of course, ये मेरा XP का square चल रहा था. XP, I can write it as 25. Now, I need to find the area as well. Okay, so area would be, area of a right angle triangle is equal to half. Of course, you have to write the formula as well, right? Half base into height, half. What was base? What did I find? That was 15. Height was given as 20. This becomes 10. And the final answer would be 150 meters square. This was the area which was needed to be found out. Next question पे चलते हैं. Question number 7. Find the area of the figure PQTS is a square of side 28 centimeter and SRT is a semicircle. भाई पूरी फिगर का एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया, राइट? अब मुझे साइड 28 दी हुई है, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है गाइस? दैट इज a square. Now a is given as 28. I can find it very easily. 28 square. So that is nothing but 784 centimeter square. लो इतना सही सी. Now अब बात करी हमने सेमी सर्कल की. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा भाई? एरिया ऑफ एंटायर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी नो पाई एज 22/7. आर मुझे मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. अब एस टी टोटल कितना दिया हुआ है? एस टी is 28. If ST is 28, so diameter becomes 28. So radius becomes 14. Right? So radius becomes 14. So 14 into 14 by 2. 7, 2s are 14. This goes 22 into 14. That is nothing but 308. So यहां पे आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पे आ गया 784. सो फाइनली द एरिया वुड बी 784 by 308. दैट इज नथिंग बट 1092 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों को मेरे को ऐड करना. दैट्स इट. इतना ही छोटा क्वेश्चन था. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. इफ 2 थीटा, अब यहां पे 2 थीटा नहीं, एक्चुअली इट वाज चेंज्ड इन द स्कूल. If theta is an acute angle and 2 sine theta is equal to √3, find the value of theta. So sine theta is nothing but √3/2. So अब √3/2 sine की फॉर्म में लिख सकता हूं. Yes, sine theta is equal to sine of 60 degree. Comparison, sine of theta is equal to sine of 60 degree. So theta is equal to 60 degree, which is an acute angle given x1. The mean of 100 observation was found to be 50. Later it was realized that one of the observations 50 was mistakenly written as 150. Find the correct mean. Okay, so 100 observation means x1, x2, I don't know these observation till x100.
इस सब का मीन डिवाइडेड बाय 100 which was given to be 50, राइट? अब वो कह रहा है कि भाई 150 लिख दिया इसमें गलती से, ओके, x1 x2 till x99, I don't know these, but एक मेरे को ऑब्जर्वेशन पता चल गई, that was 150 divided by 100 which was given as 50. यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं निकाल सकता हूं x1 x2 till x99 plus 150 is nothing but 5000. सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन मैंने निकाल लिया. अब मैं निकाल सकता हूं सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस which is nothing but 5000 minus 150, that is 4840, राइट? अब देखते हैं. मेरे को उसने बोला कि नहीं, आपने गलती से 150 लिखा, आपको ठीक जो यूज करना था that was 50, रिप्लेस इट. मतलब कि x1 x2 till x99 plus 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट वाज 100. ये मेरा करेक्ट मीन आ गया, राइट? सो x1 till x99 मिल गया मुझे, यस, 4850. इसी के लिए तो रखा था वहां पे, प्लस 50 by 100. So of course I'm getting the correct mean over here. This is nothing but 4900 by 100. ये कैंसिल हो गया, correct mean. So correct mean is nothing but 49. That's it. Next question. Question number 8. Calculate the area of a quadrilateral ABCD. A is 90, AB is 30, BC is 42, CD is 20, DA is 16. So, मेरे को quadrilateral बनाना है, ये तो मुझे 90 दिया हुआ, right? So this is given as 16, ये A, this is B, this is 30, and यहां पे मेरे पास D already आ चुका, right? Now this is given as 42, BC सबसे बड़ा 42, and this is given as 20, CD, right? Now मेरे को इसका एरिया निकालना है. This is 90 डिग्री. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, भाई क्वाड्रिलेटरल के एरिया का तो फॉर्मूला कोई होता ही नहीं है. व्हाट शुड आई डू? दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं. ये ट्राइंगल बना, राइट? नाउ ट्राइंगल एबीडी, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. मेरे पास साइड्स हैं. माय प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. सो एरिया क्या आ जाएगा? मैं इसको A1 ले लेता हूं. एरिया 1 कितना आएगा? बोलो. हाफ बेस इनटू हाइट. सो हाफ, what is base? That is 30. What is height? That is 16. 2, 8 times 8 3 is 24. That is 240 centimeter square. ये तो आ गया. अब मेरे को ये A2 भी तो निकालना पड़ेगा, फिर ऐड भी करना पड़ेगा. कैसे निकालें? ये 42 एंगल दिया नहीं हुआ. आई नीड BD. सो BD निकालने के लिए इन सेम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. सो BD स्क्वायर is equal to 16 square plus 30 square, right? So this comes out to be 256, and this comes out to 900, and the total comes out to be 1156. That is BD square. I can find out BD by taking the square root. That is nothing but 34 centimeters. अब मेरे पास ये आ गया 34 centimeters. Now, यहां पे अब A2 में क्या लगेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला. A2 is equal to under root of S minus A, S minus B, and S minus C, right? So S की वैल्यू क्या आएगी? 34 plus 42 plus 20 divided by 2, which is 96 by 2, which is nothing but 48. So A2
s की वैल्यू, s की वैल्यू आई 48। ठीक है, सबसे पहले s माइनस ए, 28 माइनस कर दिया तो कितना आया, 20 माइनस कर दिया, सो आंसर आएगा 28। मैं सीधा लिख रहा हूं s माइनस बी, अब मैंने 34 माइनस कर दिया, कितना आएगा 14, और उसके बाद मैंने 42 माइनस कर दिया, अब कितना आएगा 6। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करो एंड यू विल गेट द आंसर एज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया क्या बना, a1 प्लस a2 से बना। What was A1? A1 was 240, sorry, and A2 was 336. So the final answer was 576 centimeter square. That's it. Next part. Construct a regular hexagon of side 6.8 and write the steps of construction. भाई 6.8 पे बनाना है, all angles are 120 degree each. ये मैंने 6.8 बनाया. This is AB. Then of course कट लगाना आपको आता है, द सेकेंड कट वुड गिव यू 120, अगेन इन द सेम वे यहां पे फिर से कट लगाओ, पहले 6.8 यहां पे मार्क करो, 2 कट्स लगे, फिर से 120, राइट, कैरी ऑन इन द सेम वे। सो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, सो ए बी आप बनाओगे, देन 120 बनाओगे, देन 6.8 मार्क करोगे, फिर 120 बनाओगे, फिर 6.8 मार्क करोगे, फिर 120 बनाओगे, फिर 6.8 मार्क करोगे, यू विल गेट ई। ए पे 120 मार्क करोगे, 6.8 बना के you will get F, join E to F. You don't need to make angles over there. Property used, each interior angle of a regular hexagon is 120. So draw AB as 6.8. जो भी मैंने बोला, exactly in the same way you can write it down very simply. Right? Next one. Find the solution of simultaneous linear equation graphically. Graphically निकालना है. Okay. मेरे पास equation है 2x plus y is equal to 7. Okay, y is equal to 7 minus 2x. So I need to find x and y. I need to find the coordinates, right? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, you should get the x intercept and the y intercept. जहां पे x 0 है और जहां पे y 0 है. जब x 0 होगा, y कितना होगा 7, और जब y 0 होगा तो x कितना होगा 3.5. I just take one more point. X को 1 पुट कर दो, y would be 5. Done. अब नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास आ गया x is equal to 8 minus 2y. अब इसके लिए भी मेरे को इंटरसेप्ट्स निकालने सबसे ज्यादा जरूरी, बिकॉज एज सुन एज यू गेट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आपको पता चल जाएगा कि लाइन बनेगी कैसे एंड कहां पे कट होगा, देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने y को 0 कर दिया, x is 8. दूसरी बार x को 0 कर दिया, y will be 4. और एक बारी x y को पुट कर देते हैं, y को 1 पुट कर देते हैं, x would be 6. 3 पॉइंट्स ले लिए, ग्राफिकली बनाना है, I've already made it for you. So this is equation 2x plus y is equal to 7. देखो 0,7 marked है, 3.5, 0 marked है, and the second one is over here, x plus 2y is equal to 8. So 8,0 and 0,4 both are marked. They both meet at 2,4, 2,3, which is actually being asked the question. Next question पे चलते हैं. Question number 9. A cuboidal box, dimensions, mention, gift wrap करना है. Single sheet की dimensions मुझे दी हुई हैं. If the total number of sheets मुझे मिल जाए, टोटल कॉस्ट मैं इजीली निकाल लूंगा. 1 शीट की कॉस्ट मुझे 10 दी हुई है. ओके, सो क्यूबॉइडल बॉक्स की बात कर रही है, सो आई विल फॉर्म अ क्यूबॉइड. इसको मैंने गिफ्ट रैप करना है, राइट. सो लेंथ मुझे 15 दी हुई है, ब्रेड्थ मुझे 5 दिया हुआ है, हाइट मुझे 8, राइट. इसको गिफ्ट रैप करना है, मींस ऑल द साइड्स हैज टू बी कवर्ड. So I need to find the total surface area. What is total surface area? 2 times LB plus BH plus HL. So 2 times L and B, that is 15 into 5. B and H, that is 5 into 8.
h and L, that is 8 into 15. So 2 times, this becomes 75, this becomes 40, and this becomes 120. So the total becomes 470 centimeters square. This is the total surface area. Now, इसको मैंने कवर करना है शीट से, राइट? सो शीट की डायमेंशंस मुझे दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर्स. सो मैं इसको ले लेता हूं L1 और इसको ले लेता हूं B1. ठीक है, फॉर द शीट. सो इससे कवर करना है, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. एरिया ऑफ शीट विल बी L1 to B1. That is 10 to 4.7. That is nothing but 47 centimeters square. Now, how many sheets are required? N is the number of sheets required into area of sheet into area इसका cuboid का, right? So N, this becomes 47. I've already found out area of cuboid is 470. Number of sheets are 10. So first part is done. Now I need to find the cost. Cost कैसे आएगा? Number of sheets into rate. Number of sheets are 10 and the rate was already given as 10. Answer is rupees 100 is the cost of wrapping. Next part पे चलते हैं. Now I need to factorize this. So what is the first rule of factorization? Common निकालना है. So 4 x भी कॉमन आ सकता है, y भी कॉमन आ सकता है. So क्या बना मेरे पास यहाँ पे? x square minus 11x plus 28, right? अब यहां पे तो 3 terms आ गई. What do I need to do? I have to use splitting the middle term. दो नंबर्स को ऐड किया, -11, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, that is 28. So 7 4s are 7 4s, 7 4s are 28, and यहां पे minus, so means both has to be negative. This is given to be 4xy, x square minus 7x minus 4x plus 28, 4xy, x common, x minus 7, minus 4 common, x minus 7. 4xy, x minus 7 into x minus. That's it. Next part. The angles of a quadrilateral ABCD taken in order. Find the angles of the quadrilateral and name the quadrilateral hence formed. Okay. अब quadrilateral के angles, let the first angle be 3x, second angle be 4x, no, 7x, sorry, it was 7x, third angle be 6x, and fourth angle be 4x. In सबका sum, I'll use angle sum property, which is nothing but 60. So, सबको add किया, this would become 20x, which is nothing but 360, x is 18. So, my angles are 3x becomes 54, 7x becomes 126, 6x will become 108, and 4x will become 72. Right? अब कुछ पता चला क्या बन सकता है? 3x plus 4x, no, 3x plus 7x, which is nothing but 54 plus 126 is nothing but 180. अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. इन दोनों का सम, ये 3x ले लिया, ये 7x ले लिया, इन दोनों का सम 180, मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल. व्हाट अबाउट द अदर टू एंगल्स? इसको मैंने 6x ले लिया, इसको मैंने 4x ले लिया, इन दोनों का सम भी 180, मींस ये दोनों लाइंस तो क्या हो गई? पैरेलल. सो यहां पे लिखना पड़ेगा 6x plus 4x is also 108 plus 72, which is 180. So मेरी फिगर अब कैसी बन जाएगी? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ठीक है. अब यहां पे और यहां पे this has to be 3x and this has to be 7x. ये 6x और ये
राइट. सो मैं इसको ले लेता हूं A, B, C एंड D, टेकन इन ऑर्डर. डन. सो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल. अब ये बना क्या? ट्रेपेजियम. One pair of opposite side is parallel each other. Next question. Question number 10. Prove cos 37 by sin 53 minus sin 68 by cos 22 is 0. So, LHS से शुरू करते हैं. Now, ऊपर है cos, नीचे है sin. Complementary angles का यूज करेंगे. So, cos को मैं लिख सकता हूं sin of 90 minus 37 by sin minus sin 68 cos 22. साइन को भी चेंज कर सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री. cos of 90 minus 68 degrees by cos of 22 degrees. अब sin of 90 minus 37, that is sin 53 degrees by sin 53 degrees minus cos of 90 minus 68, that is cos of 22 degrees by cos of 2 degrees. This gets cancelled, 1. This gets cancelled, 1. So 1 minus 1 is 0, which is equal to RHS. We'll get full 3 marks. Next, the volume of cube दिया हुआ है. It is to be painted red on all the 4 lateral surfaces and blue on the remaining surfaces. Find the total area to be painted blue and the area to be painted red. एक काम करते हैं, क्यूब बना ही लेते हैं. विजुअल ज्यादा इजी कर देते हैं क्वेश्चन को. दिस इज अ क्यूब. ओके, सो अब देखो, फ्रंट साइड, बैक एंड ये वाली साइड. यहां पे तो मैंने पेंट क्या करना है, लेटरल फेसेस पे रेड. ठीक है, इन सब पे होना है रेड. टॉप पे और बॉटम पे क्या पेंट होना है? ब्लू. वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है. नाउ आई कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम. Volume is a cube. If the side is A, मैं यहाँ पे A लिख लूँ. Let the side be A. So volume is a cube, which is equal to 512. So A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That is 8. अब ये तो आ गया 8 meters. Now lateral faces के लिए area to be painted red. क्या होगा lateral faces के लिए? 2 times नहीं, 4 times. Lateral था 4 a square, 4 faces, so 4 into 8 square, which is 4 into 64, which is equal to 256 meter square. Area to be painted blue. Top face and bottom face, that is 2a square, so 2 into 8 square, that is 2 into 64, that is 128 meter square. That's done. And now the last question. Last part of the last question. From the figure given below, find the value of secant q. Okay, इसका secant निकालना है. And tan s, इसका tan निकालना है. Okay, so मैं एक काम करता हूं, secant q निकालें. secant q, secant क्या होता है? hypotenuse by base. Do I know the hypotenuse? Yes, of course, 29 by 21. That is secant q. Right? ये तो मुझे मिल गया. मेरे को अब tan s चाहिए. Tan s. Tan of s is given by perpendicular by base, which is nothing but PR by RS. ना मेरे पास PR है, ना मेरे पास RS है. ये तो गड़बड़ हो गई. So I have to find it out. So triangle PQR में देखो, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर. मैं कम से कम PR तो निकाल सकता हूं. This goes out to 29 square. QR goes out to 21 square. PR square.
right? So this is 841, this is 441 PR square. So this goes out to 400, which is equal to PR square. So PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That is 20 centimeters, of course. अब ये मेरे पास आ गया 20 centimeters. ठीक है, अब ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल PRS. नाउ इसके अंदर PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर. अब PS that is 25 square, PR that is 20 square plus RS square, right? So इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 25 का स्क्वायर that is 625 और 400 plus RS का स्क्वायर. So RS square that is 225, RS is given by 15 centimeters. अब RS भी आ गया मेरे पास 15 centimeters. So tan of S तो आ ही गया, tan of angle S, sorry. So tan of angle S, which was given by PR by RS. Now PR is 20, RS is 15, which is 3 fours are, no, not 5 fours are, 5 threes are, 4 by 3. Tan of. So this concludes the discussion of Strawberry Field 9th class annual examination mathematics for session 22-23. Have a great day, guys, from me. Thank you.